guys, welcome back to my channel. I am Ritika. So today in this video I am going to create this very subtle yet very classy beginner's makeup look. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू मॉइस्चराइज माय स्किन विद द हेल्प ऑफ माय जॉनसन्स बेबी मॉइस्चराइजर। इसको यूज़ करूँगी मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को ना अच्छे से मॉइस्चराइज करें, कोई भी बीबी क्रीम या फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मॉइस्चराइज माय स्किन वेल। आफ्टर डेट आई एम गोइंग टू अप्लाई बिगनर्स की सेवियर जिसे कहते हैं पॉन्ड्स बीबी क्रीम एंड देन इसको मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। इट जस्ट रिटेल फॉर 65 रुपीज़। ये बस 65 रुपये की आती है। सो 65 रुपये में आपका इतना अच्छा काम हो जाता है कि आपको एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एक बीबी क्रीम और इसमें SPF भी है तो ये सनस्क्रीन का काम भी करती है। इट जस्ट रिटेल फॉर ₹65। देन आई एम जस्ट गोइंग टू बेक माई फेस सो दैट कि जो मैंने बीबी क्रीम लगाई है ये अच्छे से सेट हो जाए। सो नाउ बिगनर स्पेशली बेकिंग कैसे करें। सो आप कोई भी लूज पाउडर ले सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट अंडर माई आईज। इसको मैं अपने माउथ के अराउंड भी लगाऊंगी। एंड अपनी टी जोन पे बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है आपको वहाँ पे लगाना है। पिक दिस वेरी अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट एंड प्लीज़ इग्नोर इट इज़ क्वाइट डर्टी। इस आई शेडो पैलेट में से मैं ये शेड अप्लाई करूँगी पहले इस ब्रश की मदद से। To pick this brown shade with the इसको बस मैं अपनी आउटर वी पे अप्लाई करूंगी। एंड बेसिकली जो शेड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक दिस शेड एंड इस फ्लैट ब्रश में मैं इस शेड को लूँगी एंड इस तरीके से अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। So now from the same palette what I'm going to do is I'm just going to pick this white shade। मैं इस white shade को पिक करूँगी एंड अपनी आईज की आईलिड पे अप्लाई करूँगी। Okay, so now with the help of same fluffy brush I'm just going to remove the excess. I'm just going to apply eyeliner. And with the help of this angle brush I'm just going to pick this shade and do my eyebrows. Apply kajal
आई एम जस्ट गोइंग टू पिक दिस डार्केस्ट शेड एंड इस ब्रश को मैं इस तरीके से पिंच करके इस पैलेट में से लूँगी एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग एज अ ब्लशर एज अ ब्रॉन्जर. Just going to apply blusher with the help of my Swiss Beauty Baked Blusher and Highlighter Palette. Just gonna apply my highlighter and just gonna pick this shade and apply it on my inner corner of eyes. With the look, I'm going to apply my Incolor Matte Me lipstick. होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है कि आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं. तो चलो देन बाय.